याद नहीं आ रहा। Very, very good afternoon to all of you. So today is a very important session and important occasion for all of us, as the session will be delivered by the most experts in the ICR administrative section, Shri Choudhary sir. He will be delivering the session on audit of contracts. So the people working in ICR system must be knowing Shri Choudhary sir. So sir has retired from ICR service, and he was formerly director special duty at the level of Joint Secretary. His qualification is MA in English from Patna University, Executive Master in International Business, IIFT New Delhi. He worked in various capacities, from section officer to director administration, director agricultural extension to director special duty at ICR. And he has developed this tenor development program in Ministry of MSME, and he served as guest faculty at ISTM New Delhi. He has been the member of the various expert groups, Committee on Administrative Cadre Restructuring and Review of Recruitment Rules for Scientific Manpower of ICMR, Distance Education Program of the Sarva Shiksha Vision of IGNOU, Advisory Committee of the National Testing Agency for All India Entrance Examination for admission to different program of the State Agricultural Universities, and he was the member of the Advisory Council Journal Voice of Research, member and of the editorial board Bal Chapel Global Voice of Children. And during his service career tenure at ICR, he has visited many foreign countries like USA, UK, France, China, Malaysia, and Thailand. We are very fortunate, we are honored, we are grateful to welcome Shri Choudhary sir to the 28th session of the pre-examination training for limited departmental audit and account examination. So sir is very busy. Presently also he is not in India. He is at just right now he is at USA, but still because of his keen interest on the subject, he just wants to loves to talk to the trainees on different occasions. That is why sir has accepted our invitation for becoming the resource person for a very important topic on audit of contracts. So once again, I welcome to Kanhaiya sir to this pre-examination training for limited departmental audit and account examination. Now, sir, it is over to you. You can conduct your session, sir. Screen unmute.
No. 1 minute, sir is just coming. Sir is sharing his screen. So all the participants, am I audible? Anyone tell? Am I audible? No? Yes. Okay. Sir, from our end, it is okay, sir. Maybe some problem at your end, sir.
सर सर थोड़ा अब तो अनम्यूट हो गए हैं, थोड़ा बोलिए, कुछ आवाज आपका आ रहा है कि नहीं? सुनाई नहीं Hello. हेलो सर। Hello. हाँ, या नाउ ऑडिबल सर। Okay. Sorry, there was some problem. या तो शुरू करें फिर हम लोग। हाँ सर, शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आप सब लोगों को नमस्कार। तो हिंदी या अंग्रेजी क्या ठीक रहेगा लोगों के लिए? सर बायलिंगुअल बायलिंगुअल कीजिए सर। अच्छा, ओके, मिक्स बाइलिंगुअल। मिक्स इनको जरूरत होता है। ओके। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि देर आर 134 पार्टिसिपेंट्स। हाँ, 134 कुछ कॉमन में इंस्टीट्यूट लोग बैठते हैं, ज्यादा लोग, जैसे एक नोड ओके। में 15-20 लोग भी बैठते हैं कहीं कहीं। ओके, so I have a presentation also. So let me start with the presentation. So we have 1 hour time, or how much time यस we सर, have? सर 1 hour Okay. So we have already lost some time, but नो anyway, प्रॉब्लम सर, करिए। so पीपीटी शेयरिंग का कहाँ आ रहा है? स्क्रीन शेयरिंग ही तो है ना? कैन यू हियर मी? सर आप पीपीटी मेरे पास भेज दीजिए, मैं यहीं से शेयर कर दूंगा सर। ओके। मैं जस्ट मेल आईडी 1 सेकंड आपको व्हाट्सएप में दे देता हूँ, मेल आईडी सर। ठीक। वो मेल हमारा
आवाज आ रही है अब? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। और ये देख पा रहे हैं या स्क्रीन? हाँ, और थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है, अदरवाइज ठीक है, आवाज थोड़ा कम आ रही है। अच्छा, चलिए तो इसको फिर आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, या मतलब हमेशा क्यों कम हो जाता सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का वी हैव अवर टॉपिक टुडे, द ऑडिट पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आई थिंक दिस इज द टॉपिक टुडे, दास बाबू, looking at the contract management from audit perspective. Okay, so next slide. Who will? So before we proceed, I think most of you might be aware what is a contract and what is the difference between agreement and contract. Can any participant come forward and clarify these two words, these two terms? है। सर वो लोग सर उनको म्यूट करके रखे हैं सर। अच्छा, ओके ओके, एनीवे, तो दो दो चीज हम लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जनरली ए कंफ्यूजन अराइजेज दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन चेंज्ड। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ये दो चीजें तभी आप उसका ऑडिट कर पाएंगे। तो all those agreements, there may be umpteen number of agreements, those agreements which are legally tenable, जिसको कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप होल्ड कर सकता है वो, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखने की जरूरत। और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हम लोग आएंगे कि व्हाट आर द मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच शुड बी देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन ए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट बिफोर दैट we should also know when a contract is formed. Generally we have a perception, भाई अभी तो हमने साइन नहीं किया है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, so therefore the contract is not signed, but lot of things before that has already taken place. So generally you may be seeing that a proposal has been invited, tender has been floated, 10 bids or tenders have been submitted, and you have also issued a letter to them, either as letter of intent or and then a notification of award or the job order, and you also write in that job order or work order that please come and sign a contract. So we generally feel that until and unless a contract has been signed, the contract has not formed. But mind you, as per the Contract Act 1872 in India, if the proposal has been invited, proposal has been made and accepted, and this has been communicated to the person who has offered the proposal that, see, we have accepted your proposal, and you come and sign the contract. By the moment we indicate the acceptance, the contract has formed. Therefore, we should be very, very careful when we are issuing this letter of award. At least we should keep in mind as a finance person also, if that comes to you for vetting or comes to you for just having a look at it, please indicate to the purchase officer that, gentlemen, please include the basic elements of the contract in the notification of award also. Because when the dispute arises, जब झगड़ा खड़ा होता है, then we start quoting that, see, this is in the letter that you have issued. फिर हम ये कहते हैं कि this is in the contract document. फिर ये कहते हैं this is in the tender document. So all these things are then read together. So we have to keep in mind, and there is a precedence given as to which will precede what. वो हम लोग बाद में आते हैं. So therefore the notification of award is very important, and it precedes even the tender document. So if the notification of award is faulty, this will have a serious implication on the administration of the contract, management of the contract. So now we have understood what is agreement, what is contract.
and then these are the different steps. Next slide, please. If there is any question, please keep on asking in the chat box. चलिए next slide, please. So before we try to understand about different aspects of a valid contract, let us first understand. Okay, so let us first understand what is a void contract. So if any contract which is against prevailing public policies, जैसे हम कई बार अगर हमने ये कहा कि हम we are not going to have any trade relation with any country, this particular country, and that particular country has submitted a bid, and as a purchase officer you found that the price was very competitive, all the terms and conditions are good and most competitive, they have also given the lowest price, and you have entered into a contract. But if the policy is that we are not going to have any trade relation with that particular country, that contract will not be valid. So against any prevailing public policy are severely one-sided. So the contract should always be balanced, two-sided. It should not be favoring one person and disfavoring the other party. I have seen many contracts. I will give you an example. I saw one contract in Ministry of Mines, जिसमें there was one organization which entered into a contract for delivering goods and services. और उसने क्या किया, that particular organization, it's a public sector undertaking. I am telling you the factual position of that why it happens. उसने क्या किया, उसने एक दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, थर्ड पार्टी को, and this party also started charging the contract management fee as well as all the taxes and everything on the items which are being supplied by the third party, and they made a provision that all these goods and items which shall be procured through the third party will be supplied through this public sector organization under Ministry of Mines. And this continued for several years. When I was there as their advisor, then I looked at that contract, and then we had to take a very serious step, and that was questioned, and we referred it to the Additional Solicitor General for their advice, saying that this would be scrapped immediately. So ये कई बार because of your ignorance the contracts are made one-sided. So that will become void. Involve illegal activities or crimes. Suppose आपने जुए सट्टा लगाने के लिए contract कर लिया, that will be void. Who are not competent to sign a contract, we will see जो competent नहीं है, जैसे as audit officer you should know that the person who is signing a contract in the department, are they competent to sign a contract on behalf of the department? अगर वो नहीं है, in private contracts also, in contracts outside government, अगर माइनर ने साइन कर दिया, छोटे बच्चे ने कोई साइन कर दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसको कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना उसको. जैसे मान लीजिए कि कई बार आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया और ये है, लेकिन वो लड़ाई छिड़ गई, या अभी कोरोना आ गया था, तो उस परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को आपको होल्ड करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे टर्म आपने डाल दिए जिसको करना ही पॉसिबल नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. एंड रिस्ट्रेन्स सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. अब जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे कोई कर ले और उसको आपको कहे कि आप हमारे यहाँ से जब चले भी जाएंगे तब भी आप कोई जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सच कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसको कहते हैं विसिएटिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो विसिएट कर देता है,
वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाते हैं। तो as when you are auditing a contract, you should keep in mind all these things, whether this contract is implementable or not, it is whether it is balanced contract or not, ये सब चीज ध्यान में आपको रखना चाहिए एंड यू शुड गिव देयर योर एडवाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आप हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 11 ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज हु आर द कॉम्पिटेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग बात करेंगे उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट में दे आर this has been defined who will sign the contract. So all contracts are signed on behalf of the President of India. Similarly, in ICR, contracts are signed on behalf of the Secretary ICR. So, and this has been delegated, the power has been delegated under delegation of power. तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि कैपेसिटी है साइन करने का, नहीं कॉम्पिटेंट कौन है इसको साइन करने का। सपोज ए माइनर हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट, सो ओनली ए मेजर पर्सन, जो दिस पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, जो हम लोग कई बार प्रूव करते हैं कि कई बार डिस्प्यूट होता है कि वेदर दिस नहीं कहते हैं कि ये इनका तो दिमाग ठीक नहीं था इसलिए इन्होंने उस समय उन्होंने साइन कर दिया। A person with sound mind, he should not be a minor. So all these things are to be kept in view. Free consent on, और कोई किसी दबाव में कोई साइन नहीं किया हो। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, कि ये किसी लॉफुल काम के लिए, जैसे आपने सट्टा लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। एंड द लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपने किसी के मर्डर करने के लिए आपने ले लिया सुपारी, तो वो दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। और आपने देखा ही है कि किस किस परिस्थिति में, इन व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बिकम वॉइड। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन व्यू when you are signing a contract, and there are different provisions under the Contract Act. Next slide please. So when we are talking of competency of the contract, we say the person must have attained the maturity of the contract. He should be of sound mind, not suffering from any disqualification from contracting by law. Suppose there is a convict, there are insolvents, they are debarred from signing a contract. So this is called the competency of the contract. Next slide please. Then free consent, we have already discussed that आप किसी को coerce करके या under influence or under duress or through fraud, misrepresentation, so if you have entered into a contract, this contract shall not be valid. So there should be free consent. तो हम कहते हैं ना कि हमने, so there should be meeting of minds in good faith. So there should be एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में आपने समझ लिया है, समझ बूझ के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम कई बार कहते हैं ना भाई आपने समझ बूझ लिया है ना इस बात को, और तब आप दस्तखत कीजिए, समझ बूझ के इसको साइन कीजिए, नॉट सिंपली गोइंग बाय द इन्फ्लुएंस दैट somebody is telling. So only those contracts which will be valid, which are entered into with free consent, जनरल भी या फिर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड अदर एलिमेंट इज कंसिडरेशन। आपने देखा कि देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, सो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मेन, इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कई बार आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा चीज लोग ऑफर करता है फ्री, कि साहब हम तो ये फ्री आपको दे देंगे। नो, नथिंग कम्स फ्री। So there, unless there is a consideration in the contract. Consideration क्या है? That there is one promisor who is offering something. Suppose he promises you to give you a car, that this is my car, I will give it to you. And you say that, okay, for taking your car, I will pay you 1000 rupees. So there is a consideration.
और वो कंसिडरेशन क्या है, दैट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए. तो इफ देयर इज नो कंसिडरेशन in the contract, that contract will be invalid. There has to be some consideration. आगे बढ़ते हैं. Next slide, please. So this is an essential element of a valid contract, and it should be of something value. An agreement made without consideration is void, except some areas where this will not apply. The one thing is, suppose you get some gift. Suppose you get some gift from one of your relatives or your grandparents. They give you some gift, so without any consideration. So, but that will be valid. Or you are being paid for some voluntary work you have done in the past, or some time barred payment has been released under the court's degree. So except these three areas, if there is no consideration, then the contract will be invalid. चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है. जब हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीज अप्लाई करते हैं. Then object of the contract. So section 24 stipulates the object of the contract should be lawful. अब हमने कहा कि आप किसी का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट एन लॉफुल एक्ट. नेक्स्ट, agreements void ab initio. So section 25 to 23 says that these are the following conditions in which the contract will be void ab initio. Ab initio means from the beginning itself, as if no contract has taken place. जैसे agreements in restraint of marriage. Suppose somebody comes into an agreement. ये खास करके ये फिल्म इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत होता है ये, that you suppose they enter into a contract that you will not marry hereinafter for another 20 years or 10 years. ये सब that will be void. Restraint of trade or business. अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं, आप मेरे साथ आ गए काम करने के लिए, अब आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई अपना काम नहीं करेंगे, even if you leave my company, you leave my organization. Restraint of legal proceedings. अगर ये कोई बाइंड करता है, बिकॉज दैट इज योर फंडामेंटल राइट, दैट इज योर राइट टू टेक लीगल रिकोर्स. अगर उसमें किसी ने ये लिख दिया, जैसे कई बार ये होता है कि अगर हमने आपने हमसे ab initio means from the beginning itself, initial. Ab initio, this is a Latin word. So ab initio, in the beginning itself it is void. It cannot be taken further. आपने कागज पर तो कर लिया है. You might have taken it on your paper, you might have reduced everything on the paper, but that is not implementable. So that is ab initio. So restraint of legal proceedings. Suppose you have entered a clause that no legal proceedings shall take place, even if there is a dispute, and dispute is not settled amicably, but the party shall not take legal action against the other party. So that is not possible. If the dispute is not settled amicably, the dispute resolution mechanism has to be is there in place, and either you go for arbitration, you go to the court of law for settlement of your dispute. So that is a right. So this cannot be a clause in to restraining the parties from taking legal proceedings. Of uncertain meaning, ambiguous contract. जैसे एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल आपको देता हूँ. कई बार जो एज ऑडिट ऑफिसर, व्हाई you people should know all these things, because you have to, if you have to audit the contract, that's a, and there has been a very serious case between Steel Authority of India Limited and ThyssenKrupp. जो German, there was a German company which still that company is there, which supplies these lifts and escalators.
So Sale Authority of India Limited was to supply a steel to them for making these escalators and lifts. And there was a term in a specification saying that there was some specification later on that was changed to saying that good quality steel shall be supplied. जरा ध्यान से सुनिए इसको. And this is a very famous case. You can go to the website of the Supreme Court of India and find out this case. Steel Authority of India Limited and ThyssenKrupp. This is a German company. So the moment this Steel Authority of India this good quality steel was introduced, and the supply was made by the Steel Authority of India Limited, for one reason or the other the consignment was rejected. ये हुआ कि नहीं भाई ये तो this is not a good quality steel. So now the question arose as to what is a good quality steel. Steel Authority of India Limited ने कहा कि ये तो हमारा good quality steel है. And you will be surprised to know that more than 20 years that both the parties kept on fighting. पहले लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए. More than 20 years these people kept on fighting as to what is a good quality steel. So these uncertain terms should not be used in the contract. ये ध्यान में रखने की जरूरत है. By way of wager, वही गैम्बलिंग और इस सब के लिए all these things should not be included in the contract. इसके लिए contract करने नहीं होता है. Exceptions. But if you have not indicated in the contract the dispute resolution mechanism or arbitration clause, but later on you decide when the dispute arises that let us go to the arbitration. कोई dispute हो गया, आप settle नहीं कर पाए, जैसे आपने कहा कि हमें ये supply होना चाहिए, उसने supply नहीं किया, फिर आपने कहा कि नहीं साहब आप supply कीजिए, dispute हो गया, फिर आप कहते हैं चलो भाई dispute ये खत्म नहीं हो रहा है तो हम arbitration में जाते हैं. तो वो पहले तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में आप एग्री किए कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे और किस विषय पर करेंगे, ये एक्सेप्शंस हैं. अगर आपने नहीं भी लिखा है तो आप कर सकते हैं. तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं कि अगर नहीं भी है तो आप इसको इस तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं. बाकी जो चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही होगा, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं. और कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने लिख दिया जो कि सही नहीं है, उनको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो एब इनिशियो इनवैलिड कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को. तो लेट अस मूव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एनी क्वेश्चन प्लीज कीप ऑन आस्किंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको अभी थियोरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, देन वी विल कम टू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ये ध्यान रखने की जरूरत है एज फाइनेंस और ऑडिट ऑफिसर एज टू व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेज इन कॉन्ट्रैक्ट. कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इसमें एंड वी फेल टू discharge our responsibilities at these different stages. The first stage is preparation of the contract. The second one is drafting of different clauses and then implementation and management. कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है या ये काम तो सिर्फ फाइनेंस का है. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम in implementation management of the government contract, that we are not discharging our responsibilities properly. जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आप कहते हैं, किसी ने एक आपके कलीग ने पूछा कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपने मैन पावर हायरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने इक्विपमेंट सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी पार्टी को आपने जॉब ऑर्डर दिया, किसी को आपने वर्क ऑर्डर दिया, आपने एक कंसल्टेंट हायर किया, तो ये सब चीज के लिए आप एक जो एग्रीमेंट आप करते हैं और वो एग्रीमेंट लीगली वैलिड एग्रीमेंट जो करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, और एनी अदर क्वेश्चन?
So Manai, go back to the previous stage, previous slide. So preparation of the contract. So we must be we must spend some time when we are preparing to sign a contract. मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि preparation or drafting a clause is very important, because at this point of time you have some leverage, you have control over the whole process, because once you sign a contract, the other party will not listen to you. They will always tell you that, see, this is the contract, I will go with the clauses of the contract. और उस समय वो they are on a lower pedestal, उनका पोजीशन थोड़ा कमजोर रहता है, इसलिए because they have to get the business and you are the buyer, you are the authority here. तो आपका थोड़ा you have more say in this process. तो यहाँ आप ठीक से आपको ड्राफ्ट करना चाहिए, so that tomorrow the situation does not become painful for you. So at these two stages you should spend some more time, and then as a finance person you should also be equally involved in the implementation and management of the contract, because there are different instruments which are used in the contract. ये सिर्फ जो जॉब ऑर्डर है वही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है. जैसे एक कलीग ने पूछा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो व्हेन वी आर सपोज वी आर इंपोर्टिंग सम इक्विपमेंट फ्रॉम यूके, तो हमारे उसमें कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हम यूज करते हैं. जैसे सबसे पहले आप जो आपने एक नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड इशू किया होगा, फिर देन यू मस्ट हैव यू साइंड ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, then the tender documents are also there, and all these things are read together, they become a part of the contract. फिर आप पेमेंट के लिए एक या परफॉर्मेंस गारंटी आप उनसे लेते हैं, तो एक बैंक गारंटी आप उसको कहते हैं कि यू सबमिट ए बैंक गारंटी, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट. वो भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हुआ है. या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कई तरह से आप टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें यूज कर देते हैं. जैसे आपने कह दिया कि CIF बेसिस पर हमें ये सप्लाई करना है, तो CIF टर्म अपने आप में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि टर्म उसको डिफाइन करता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. उसमें फिर जैसे ही आप वो टर्म यूज कर देंगे दैट विल बी गाइडेड बाय दैट. तो एक वो छोटा सा एलिमेंट. फिर आपने अगर ये कहा कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू करेंगे, so that is also an instrument. So there are a lot of instruments which are of contractual nature. जिन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है to make the implementation smooth, and because you have to ultimately you are also accountable for the money you are spending, and there are different organizations, institutions which is going to audit it later on. इसलिए आपको वो सब इस तरह से करना है जो कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें ठीक से. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Why you should not sign on dotted lines or printed agreements from furnished by the, because if the contract somebody has asked why we should not sign on the dotted lines by the from on a contract given by the party. Why a party should give you a contract prepared by them? Then if the contract is not balanced from both the sides, अगर उसने अपने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक एग्जांपल दिया कि देयर वाज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट that the person who was hired to as a suppose like CPWD, that public sector undertaking was hired as a management consultant, and they also became the supplier in the same contract. So they started charging the management consultancy fee for managing the contract, and also they became supplier, and they were taking their profit, and all the taxes and duties and everything was being charged by them. So this kind of one-sided contract will land you in problem. तो आपको तो so you should not be signing on the dotted lines.
you must spend some time on writing the different clauses, on preparing the contract, and that should be in consonance. All the documents should be in consonance. There should not be conflict or inconsistency in all the documents. So your tender document, your notification of award, and the formal contract that you sign, all these things, there should not be inconsistency. Otherwise, implementation of the contract would be difficult. You cannot implement that contract. And that is the reason you should spend some time and look at the contract, ensure that your interest, government's interest, is safeguarded properly. It is not going to harm the government. नहीं होने से क्या दिक्कत होती है मैं आप बताता हूँ आपको. एक I will not name that institution. I was examining one contract in ICAR for developing some infrastructure. Say for instance this sports facility, and the huge amount of interest had to be paid to the contractor which developed that sports facility, क्योंकि आपने उसमें कुछ ऐसे क्लॉज डाल दिए थे. I will not name that institution. Ultimately, we had to pay that interest because the payment was delayed because of dispute. Payment was not released in time. So, or उसमें the problem was that we had not indicated the entire scope of the work. जब वो काम शुरू हुआ तो पता चला कि जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर सब हैं, बोल्डर्स हैं, and that was not included in the scope of the work. So then the dispute arose. तो आपको अगर डॉटेड लाइन पर सिर्फ करते रहेंगे तो देन यू मे लैंड इन प्रॉब्लम्स. तो ये नहीं करना चाहिए. हम लोग देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए. एनीवे, पहले हम बढ़ते हैं आगे. So you have to be very, very careful in drafting a contract, and that is the reason the government says that you sign, prepare a complete contract document. और उसने काफी हेल्प भी किया है. हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे there are different types of contract which has been prescribed by the government. Next slide, please. So there are two routes of a contract. One is self-contained contract. Another one is general conditions of contract and special conditions of contract type contract. So Ministry of Finance, Government of India, if you visit the site of Ministry of Finance, you will come across several documents. And if you catch hold of one document for procurement of goods, tender document, there is a draft contract there. इसी तरह से फिर procurement of works, procurement of services. For all the three major types of procurement, there are different tender documents, and this tender document also contains a standard contract, and government always encourages to use these standard contracts. तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बने हुए हैं वो जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप में. इसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है कि जो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लागू होगा, हर तरह के, और स्पेशल कंडीशन ओनली इंडिकेट्स दैट व्हाट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे मान लीजिए कि आपने इक्विपमेंट सप्लाई के लिए कहा, तो उसमें किसी ने उसको मान लीजिए कि लैब में कई इक्विपमेंट है, तो किसी ने माइक्रोस्कोप के लिए एक सप्लाई के लिए, और किसी ने उसको LCMS के लिए कहा. तो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन द सेम, बट स्पेशल कंडीशन अंडरगो ए चेंज, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि कंट्री का नाम बदल सकता है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, सप्लायर में भी डिफरेंट, द टर्म्स ऑफ सप्लाई में भी डिफरेंट, कि कितने महीने में डिलीवरी करना है, ये पेमेंट टर्म में चेंज हो सकता है. उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो वैल्यू हैं उसके हिसाब से जो दूसरे लिक्विडेटेड डैमेज और दूसरे पेनल्टी क्लॉजेज में चेंज हो सकता है. तो these changes are included in the special conditions of contract, and the general condition remains the same. And there is another type of contract which is called self-contained contract. तो दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं. we should use one of these contracts. दोनों के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं. चलिए आगे चलते हैं.
हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट? हमारे पास कितना समय है? सर वो 5:15 बजे तक, तो हाउ मच टाइम? 20 मिनट तक सर। 20 मिनट। तो हम लोग इस पार्ट को ये समझ लेते हैं कि दे आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में यह है, हम लोग 15-20 मिनट और समय लेंगे, डोंट वरी। तो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये थोड़ा सा वो वॉल्यूम कम, ये बार बार उसको देखना पड़ता है, तो इट इज लिटिल लेंथी, ये थोड़ा सा लंबा सा उसका है, बट इट इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट एंड आई ऑलवेज एडवाइज माय कलीग्स टू यूज दिस जीसीसी एससीसी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो जो सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि सारे क्लॉजेज उसमें आपने डाल दिए हैं कि नहीं, ठीक से आपने लिखा है कि नहीं। सो प्रिपेयरिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए वी आर गोइंग अहेड, फास्ट हम मूव करते हैं। So after understanding the basic idea about the contract, now we come to see as to what are the different clauses which a standard contract should contain. चलिए next slide please. next ये सब हम लोग डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू यहाँ से होता है, इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन, फिर स्कोप, प्राइस, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टैक्स एंड ड्यूटीज, शेड्यूल ऑफ डिलीवरी डेट, फोर्स मेजर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफॉल्ट एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, शिपमेंट, पासिंग ऑफ टाइटल एंड रिस्क, वारंटी, स्पेयर, ये असाइनमेंट, unilateral termination, all these are different clauses which a contract should contain, especially a high value contract। जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें सारे क्लॉजेस आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें यू प्लीज इंश्योर दैट these in one way or the other whether these terms have been used or not। चलिए नेक्स्ट। then we also should see that अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे। सपोज हमें अमेंडमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है कि कैसे अमेंडमेंट करेंगे। हम लोग बार बार क्वेश्चन रेज करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन चेंज्ड, अमेंडेड, तो कैसे करेंगे। देयर मस्ट बी एन इनेबलिंग क्लॉज इनटू दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी, सपोज देयर इज सच ए कॉम्प्लेक्स, कोई हम कोई लैब सेटअप कर रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स कोई हमारा डिजाइन हमने डेवलप करना है कुछ इस तरह से, या हमारा कोई ऐसा कंसल्टेंसी वर्क है जिसमें कि हमने बहुत इस तरह से हमने डेटा कलेक्ट किया है जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है, वो क्लॉज होना चाहिए, स्पेशली इन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। नोटिस कैसे इशू करेंगे किसी भी, व्हाट विल बी द गवर्निंग लॉज, ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस लॉ से वो गवर्न होगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट कॉन्ट्रैक्ट। सर्वाइवल क्लॉज, देयर आर डिफरेंट क्लॉजेज व्हिच सर्वाइव इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। जैसे अमेंडमेंट का ये आपका जो एएमसी है और दूसरे क्लॉजेज हैं, इस तरह से कई सर्वाइवल क्लॉज होते हैं। इफेक्टिव डेट, कई बार हम साइन कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है किस डेट से हम, मान लीजिए कहते हैं कि 3 महीने में सप्लाई होना है, तो किस डेट से इफेक्टिव होगा जो 3 महीना आप काउंट करेंगे, ये सब लिखना चाहिए। फिर उसमें साइनिंग पोर्शन भी होना चाहिए, विटनेस का भी हो। सो दीज आर द डिफरेंट क्लॉजेज। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब क्लॉज है कि नहीं, तभी आप ठीक से ऑडिट कर पाएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हम टेकअप करते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो, और एज ऑडिटर यू शुड सी कॉम्पिटेंट आदमी ने साइन किया कि है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये दिया हुआ है कि ओनली इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से आईसीआर में इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी आईसीआर प्लस द हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो ध्यान रखने की जरूरत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रिसाइज, डेफिनिट होना चाहिए। शुड नॉट इन्वॉल्व एन अनसर्टेन एंड इनडेफिनिट लायबिलिटी। आपको ये ऑडिट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इनडेफिनिट लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही है।
use a standard form of contract, and modification should be carried out only after obtaining legal advice. These are the instructions of the government when you are handling the contract. Otherwise, that you may create some legal problem which will be difficult to handle at a later stage. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next slide, please. And there are certain there is a chapter in GFR 2017, उसको भी आप जरूर देख लें, और उसके हमने salient points यहाँ डाल दिए हैं कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं. तो वो कहता है कि 2 लाख तक का या 2,50,000 तक का, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज दिस वैल्यू, देयर इज नो नीड फॉर साइनिंग डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन. एक सिंपल आप नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड इशू करें विच कंटेन्स द मेजर टर्म्स एंड कंडीशन. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें भी वही. In case of contracts rupees 10 lakh and above, the contract documents should be express and necessary clause to make it a self-contained. So prepare a self-contained contract. Yes, these are provisions given in the GFR 2017. फिर वो कहता है कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए जहां आपने टेंडर डॉक्यूमेंट इशू किया है और ये उसमें जीसीसी एससीसी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें, बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी वेटेड एट अ वेरी हाई लेवल. और ये ध्यान रखना चाहिए कि आप व्हेन यू आर इशूइंग साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट you must write that all the 3 documents, if there is no amendment in any clause, the tender document, the notification of award, and the clauses in the formal contract, all these form integral part of your contract. ये ध्यान रखना चाहिए कि वो तीनों, अदरवाइज क्या होगा कि अगर तीनों में कहीं डिफरेंस आ गया तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट होना मुश्किल हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. टर्म की कॉन्ट्रैक्ट में जरूर करना चाहिए, और एक जरूर ध्यान रखना चाहिए दैट वंस यू हैव इशूड नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड विदिन 21 days द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइंड. अगर वो नहीं होता है देन द अथॉरिटी हैज द पावर टू रिजेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरफिट द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. ओके, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And as audit person, you should be very cautious about entering into cost plus contract. Cost plus contract में क्या होता है कि वो एक इनडिफाइंड एक डिफाइंड परसेंटेज है. इतने का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा परसेंटेज इतना होगा, इतने का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा परसेंटेज इतना होगा. तो ये जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. ये नहीं, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना चाहिए. तो ये ध्यान रखना चाहिए डिपार्टमेंट में कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नहीं. अनलेस इट इज एसेंशियल और एंड बिफोर the department agrees to sign these contracts, all the various details should be incorporated in the contract document कि कैसे उसको आप वर्कआउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, उसका फाइनेंस और लीगल उसका वेटिंग हो गया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल हो गया है कि नहीं टू इंटर इनटू ए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जनरली कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट साइंड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्राइस वेरिएशन क्लॉज, कि ये नहीं कि so price variation clause should not be incorporated in the contract unless the contract is going to be the work is going to be completed in more than 18 months. और अगर ऐसा है तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज का फॉर्मूला जरूर उसमें डालना चाहिए कि कैसे प्राइस वेरिएशन क्लॉज को हम वर्कआउट करते हैं. so that you have to be very very watchful. अभी उतना समय नहीं है, हमने प्रोविजंस यहाँ लिख दिए हैं. you go and read it at leisure, that will help you in answering the questions in your examination. चलिए नेक्स्ट क्लॉज प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. so this is also the detail about the this price variation clause. Next slide please. Next slide. नहीं, उससे पहले पीछे वाले स्लाइड में
Previous slide. Previous slide, please. So there are certain contracts in which the government material and is used, या government equipment is used. तो उसके लिए there should be a specific provision in the contract, and then there should be a specific provision also for periodic verification and checking of that equipment and the material which is being used. नहीं तो क्या होता है कि आपका सामान टूट गया, खराब हो गया, ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा. So as when you are signing a contract, you ensure that all those conditions are there. आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर तो देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट नेक्स्ट. Then this is important. The term of contract, including the scope and specification, should not be materially varied. कि ये this will lead to the change in contract, because this leads to so many issues, vigilance issues, or ये. So the moment it is seen that without proper approval of the competent authority and financial concurrence, if you have changed the contract and the government has suffered on account of that alteration, then it will be a serious problem for everybody. Okay. And then records should be maintained properly. Any amendment should be duly signed by both the parties. ऐसे नहीं कि आपने एक चिट्ठी लिख दिया और आपने कहा कि नहीं हम तो अमेंड कर रहे हैं, आप उससे साइन करके उससे जरूर मंगवाएं, and you keep it in as a record. So any amendment should be signed by both the parties. ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखेंगे, then you will be able to discharge your responsibilities more properly. Or as when you are auditing the contracts, you must ensure that भाई ठीक है आपने amendment तो किया, whether other party has signed it or not. So next slide please. Next slide. There should be no extension in the, normally there should be no extension in the delivery period, लेकिन हर चीज के लिए अप्रूवल लेके करने की जरूरत है. और 3 साल के बाद जो पेमेंट अगर है, unless it is there is a decree of court, it should not be made. ये ध्यान में रखने की जरूरत है. ये this is part of the general financial rule. It also says that the government has every right to reject goods which do not conform to the specifications. चलिए next slide. So these are the different provisions in the contract. Dispute resolution का, if there is any dispute, must take advice of your legal department. हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी दिक्कत है कि हम लीगल डिपार्टमेंट को बहुत कम कंसल्ट करते हैं, अनलेस द डिस्प्यूट अराइजेज. शुरू से ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ हम हमारा ये देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन with the legal department when we are implementing government contracts. Next slide please. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए when you are handling a government contract. आप पढ़ लेंगे इसको. Most of the things we have discussed. Next slide please. Next slide. So, and this is also very important, as finance and administration personnel, this is our responsibility to ensure that different instruments are being, the contract is being monitored, the implementation of contract is being monitored, and different instruments are being monitored properly. जैसे अगर बैंक गारंटी आपने लिया है और उसका पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसको रिन्यू करना है या उसको डिस्चार्ज करना है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोऑर्डिनेशन, अमेंडमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टू सप्लायर, ये सब सारी चीजों को हमें प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्मूथ एंड विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल एंड फाइनेंशियल हैसल प्रॉब्लम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ बीडर. ये आप देख लेंगे कि कई बार हम लोग नहीं करते हैं, इसको ध्यान में नहीं देते हैं, लेकिन 2017 में when the GFR was amended,
this was incorporated as a special clause. If there is any element of corruption and this thing, we have to take adequate measure and debar the supplier, debar the contractor, but after following certain procedure. इसको आप जरा पढ़ेंगे और ये इसको भी ध्यान में रखना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ. Next slide please. Next slide that we have discussed. Next slide. Next. So and this is one thing which you should keep in mind when you are checking the purchase bills. This is as per the ICR audit manual. So there are different clauses that the bills are prepared in ink. खैर अब आप देख लीजिएगा कि इंक में भी होता है कि नहीं, लेकिन वाउचर्स आर इन प्रॉपर फॉर्म, ये ध्यान में रखना चाहिए. बिल्स आर साइंड, उसके सारे टैक्स एंड ड्यूटी उसमें लिखे हुए हैं कि नहीं. रेवेन्यू स्टाम्प तो अब यूज नहीं होता है. द परचेज ऑफ स्टोर्स हैव बीन सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. और ये सब कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. और एंड बिफोर दैट there is a instruction of the government that all the important contracts, I think the value is 25 lakhs and above, a copy should be sent to the finance department. ये एक आप जरूर चेक करके रखें that before you scrutinize the bills, you must catch hold of the copy of the contract and notification of award as finance officer, and check all these audit, make all these audit checks before you pass the bill. This is there in the audit manual 2015. Next slide please. I think we have come to a conclusion, to the end of the discussion, and it says that eternal vigilance is the, पीछे जाएं क्या लिखता है वो, eternal vigilance. Previous slide. Eternal vigilance is the price of liberty. नहीं उसके बाद next slide. नेक्स्ट. तो ये इटर्नल विजिलेंस इज द की, कि हर स्टेज पर हम विजिलेंट रहें. ओनली देन वी शैल बी एबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक and safeguard the interest of the government and our organization. Okay, so with this I conclude the next slide. So this is all about the contract administration, contract management, its audit, checking of bills, what are the different clauses. So if you have any other question besides the question that we have been posting in the chat box, you are free to ask if you have time, because I have all the time to answer and take your questions. So any question you have about the contract administration, auditing of the question, auditing of the contract and payment of bills and all those things, you are free to ask. Now it is over to participant. Any doubt? You please ask without writing in the chat box. You please write. You please ask to the sir. So no doubt from. Sir, what is turnkey works? टर्न की का देखिए, जो हम टर्न की चाबी, ये ऐसा काम जब उनको कहते हैं, when we say that you give this lab fully prepared, you and the whole thing you have to take care of, the building and furniture and fixtures and electrical gadgets, all those things, you hand over the key only at the end of the project is over, and and for this you enter into a contract. Such contracts are turnkey. They finally complete the whole thing and give you the key, and you start using that facility from the next day. So these contracts are turnkey. उसका नाम ही है turnkey project. So अभी तो क्या है कि कई बार you give a contract for construction of building separately, then furnishing separately, then some electrical work separately, then you manage the then lab equipments are bought separately, like that. But there are many projects in which you give the entire work. Suppose the work has to be, the scope of work has to be such which necessitates to giving a contract on turnkey basis, so that
They complete the work, give you the key, and you will start using it from the next day. So that is turnkey project. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Any other question? The difference between contract documents and tender documents. Tender document is a document which indicates as to how and on what terms and conditions you are going to procure the goods and services or work from the market. So you lay down the scope, or you define about the work, you define about the goods, you give the specification into that, you indicate different terms and conditions on which the item shall be procured. So this is at the time of floating your inquiry. You prepare a document, but once somebody submits that offer, submits from the offer from their side, you look at their offer and you see whether they are meeting your terms and conditions or not. They are meeting your specification, the equipment or item is meeting your specification or not, and then you accept that offer. So then it becomes a contract between both the parties, the supplier and the buyer as purchase authority, you. So the tender document is the terms and conditions on which you are going to procure something. And once you have accepted the offer based on that inquiry, based on that tender document, then the conditions of those terms and conditions of the tender document become a part of the contract. ये मोटे तरह से इसको समझने की जरूरत. Thank you, sir. Got this point? Yes, sir. Thank you. So you have to be very, very careful when you are preparing a tender document, that it should not, because you have seen that how ab initio certain contracts will become invalid if it is impossible to implement, if it is one-sided. So do not prepare a tender document which makes the work impossible, which is not implementable. So you have to take into consideration all those things. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other question? So if there is no question, then Das Babu, over to you now. Yes, sir. And I'm sorry there was some delay in the beginning, because I'm connecting with you from USA. I am right in USA, so there was some issue. That was my problem. It was not the problem from the institute. It was my problem. I No could problem, not sir. connect in No time. problem, sir. Hmm. So we are honored for your this brilliant session. I think it is a very outstanding session on contract management. And if in detail this session will be conducted, I think 3 to 4 hours time will be taken. Yes. Is such a means everything has been included in this PPT. So thank you very much. In spite of your busy schedule, sir, you have spared time for the participants, for this training program, for the betterment of the means organization as a whole. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you, and thanks to you, and grateful to the institution and the course director for giving me this opportunity, and all the participants for your patience. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So this today's session we are closing. Okay. Okay. Okay.